Don't eat chia seeds unless you watch this. How much chia seeds should we consume in a day? एक दिन में हमें कितनी chia seeds लेनी चाहिए? 1 to 2 tablespoon or 15 to 30 chia seeds as per day is recommended. नहीं तो आपको गैस्ट्रिक इशू और डाइजेस्टिव इशू का सामना करना पड़ सकता है बिकॉज चिया सीड्स आर रिच इन फाइबर. इफ यू कंज्यूम फाइबर इन एक्सेस सो इट कैन कॉज डाइजेस्टिव इशूज. हाउ मैनी कैलोरी इन 1 tablespoon ऑफ चिया सीड्स? 1 tablespoon चिया सीड्स में कितनी कैलोरी होती है? 1 tablespoon ऑफ चिया सीड्स कंटेन approx 58 कैलोरीज. What is the best time to consume chia seeds in a day? Chia seeds को लेने का बेस्ट टाइम क्या है? The best time is to have chia seeds is in early in the morning in an empty stomach because it control hunger, it gives the feeling of fullness, help in weight loss, good for skin and good for bone. Can we give chia seeds to our babies? Of course, you can introduce chia seeds from as early as 6 months of age because it comes with many nutrition. Chia seeds contain more calcium than milk, more iron than spinach, more omega 3s than salmon, which help to grow your baby's brain and overall health. How much chia seeds can we give to our babies? Babies from 6 to 12 months, 1 teaspoon, 5 gram daily, mix in fruit or sprinkle on cereals. Toddlers from 12 months to 5 years, 2 teaspoon, 10 grams daily. हाउ डू आई प्रिपेयर चिया सीड्स फॉर द बेबीज़? चिया सीड्स को ओवरनाइट सोक कर दे जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए, बेबी को इजीली डाइजेस्ट हो पाए, एंड देन आफ्टर यू कैन ऐड इनटू स्मूदीज, ओट मिल्क एंड मिल्क.